Hi everyone. So today we are going to start the second session of some natural phenomena. So in this session what we are going to do, in the previous session we learned about lightning. Yes, everybody remember what is lightning and all those things. In this session we are going to learn about earthquake, that is another natural occurrence thing. So now let me tell you about lightning in recap. Lightning is caused by what, guys? Can you tell? I want answers in the live chat. Caused by what? Charges? Yes, there are two type of charges: positive charge and negative charge. Remember, like charges do what, and unlike charges do what? देखो अट्रैक्ट अन है तो यहाँ पर अट्रैक्ट होगा अनलाइक, और लाइक में रिपल्सन होगा. मतलब माइनस माइनस विल रिपेल पॉजिटिव, पॉजिटिव विल रिपेल बट पॉजिटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव विल attract. Okay, okay guys. Okay, now lightning, always positive will be attracted by negative and negative will be attracted by positive. Now, if these are the two clouds, they are heavy. That's why they are close to the ground. In ground, which charge is there, guys? In ground there is positive charge. Remember the concept. Remember the concept that in ground, which charge was there? In ground, which charge was there? In ground there was nothing but positive charge. In ground there was nothing but positive charge. Now remember one thing: in the cloud, at a down part there are negative charge. In every cloud, if you see, at the below part there will be negative charge. At the top part there will be positive charge. Now you know what does do? Positive will attract a negative or negative will attract a positive. So here what will happen, हाँ मेरा शरीर खराब है पर फिर भी मैं ले रहा हूँ क्लास, because your syllabus needs to be proceeded. Now these are the positive charge, these are the negative charge. Clouds के down part में क्या होता है? Negative charge, right? Now clouds के down part में negative charge होता है. This negative will attract this positive. तो यहाँ पर lightning दिखा देगा, स्पार्क दिखा देगा, स्पार्क दिखाई देगा. सेम with this positive will attract this negative, so यहाँ पर भी स्पार्क दिखाई देगा. तो यहाँ पर ग्राउंड के साथ भी हो सकता है, क्लाउड टू ग्राउंड हो सकता है, या फिर क्लाउड टू क्लाउड भी हो सकता है. ऐसे ही लाइटनिंग होता है. लाइटनिंग इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस. अट्रैक्शन बिटवीन द चार्जेस. एक थिंग याद रखना, किसी को भी कंडक्टर हम बोलेंगे. कंडक्टर मीन्स इट इज लेटिंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास, और इलेक्ट्रिक चार्जेस इज पासिंग. Electric charges is passing through it, that is conductor. Like a metal, like iron, through which electric charges can pass. That's why it is called as a conductor. So remember an example, iron. Okay. Next thing, insulator. Insulator. Insulator means does not allow electric charges to pass, like plastic. ना कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं जब लाइटनिंग होते है? ये हाउस है, यहाँ पर एक मेटल कंडक्टर होता है.
यहाँ से जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ये लेता है और सीधा सीधा ग्राउंड के नीचे वो चार्जेस को पास कर देता है, जिससे ये हाउस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये होता है मेटल कंडक्टर। When a lightning is striking this house, this is first striking this metal. This is carrying the electric charges and putting it at the ground. So it is not affecting the house. Clear. Today we will start with earthquake, but before that, let's do a quick recap. So let's go to the quick recap. So let's recapitulate the lightning that is already done. Recapitulating the lightning that is already done means we have already learned and recapitulated lightning, right? Now let's do a recap quiz. Actually, let's. Can you tell through which very easy question that allows the transfer of electric charge to it? Is it a insulator, conductor, वैक्यूम? यार वैक्यूम से तो इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि कोई मीडियम चाहिए ना, ये मीडियम इज नीडेड, तो वैक्यूम से तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। I'll give you one hint. So this is not your answer basically. Answer can be air, insulator, and conductor. See, air is a bad conductor, means a insulator that does not allow electricity to pass. So this is also not an option. Insulator means it does not allow the electricity to pass. So conductor is a option. If metal was in the option, iron was in the option, copper was in the option, silver was in the option. So these all would be correct. These all are actually conductor. Clear? Clear. Now next question, check. Why is lightning conductor installed in a building? मैं समझाया ना, यहाँ पर होता है lightning conductor, वो क्या करता है? It collects the electric power present in the building. It forces the lightning to fall in an area where there are no buildings. It repels the lightning. It conducts the electric charge to the ground where lightning strikes. बोला? I have already told. I've already told this. Remember, this is the house. इसके ऊपर भी एक लाइटनिंग कंडक्टर होता है। जब कोई भी लाइटनिंग हो रही है, जब यहाँ पर चार्जेस ये कैरी कर लेता है और सीधा ये कहाँ ट्रांसफर कर देता है चार्जेस को, ग्राउंड के अंदर, जिससे जिससे इस हाउस के या कोई अदर बिल्डिंग्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। Now we all live and all areas are becoming urban areas, so it's difficult to find empty areas, so that's why it is injected in the ground. It's difficult to find the empty areas, right? So it conducts the electric charge, means it takes the electric charge to the ground when the lightning strikes the building. It's actually a preventive measure. Clear? Next, let's see what is an earthquake. Thunderstorms cause huge damage to life and property. I've seen, right? All the buildings will be damaged, all the areas will be damaged, trees will be burnt. That can also cause forest fire. You have learned that, right? In the previous classes in this class as well. So that is a huge damage. These are always accompanied by cyclones. Lightning क्या है? स्ट्रॉम होता है या फिर साइक्लोन होता है? जब स्ट्रॉम होता है या साइक्लोन होता है, दैट टाइम ओनली lightning is coming. If storm is happening, then only lightning is coming. That means these are carrying the lightning. Through which medium they are carrying? Through air it is carrying. Through air it is carrying. साइक्लोन्स, जब साइक्लोन कोई साइक्लोन आता है देखेंगे तब थंडरस्टॉर्म्स होगा ही, तब स्ट्रॉम्स होगा, तब लाइटनिंग होगा। जब लाइटनिंग और स्ट्रॉम्स मिल जाता है, स्ट्रॉम
plus lightning, remembered, is called as thunderstorm. ये याद रहेगा कि स्ट्रॉम और लाइटनिंग अगर एक साथ हुआ तो उसे हम लोग बोलेंगे थंडर स्ट्रॉम. These phenomena can be predicted beforehand by the weather forecasting agencies. कैसे predict होता है मैं बोल दे रहा हूँ. How these are predicted? Like this is the part. This is the a country, maybe this is a country one. Here is water. Here is water body. Here is water body, and here is land. Okay. Now, when they will be seeing a slight change in the air, six pattern this is called as. Normally, the air is going like this. Some air is going like this. They don't have pattern. First time when the air is taking the pattern, that takes a pattern of six. So first, sometimes some air comes like this. Sometimes comes like this, and it tries to take the pattern of six. At that time, the scientists predict that there is a cyclone nearby. The cyclone is a type of like this. पहले उसका सिक्स का आकृति ही बनता है. Okay. So beforehand weather conditions, ठीक है, सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग, इसके द्वारा पता लगाया जा सकता है. ओके, वेदर को जांच किए. विंड स्पीड वेरी इंपॉर्टेंट. क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन को देखते हुए एवरीथिंग कैन बी देयर. नाउ बट इफ देयर इज अ नेचुरल phenomena we can't also stop it. नाउ ये नेचुरल है, so we can't stop it. Can we stop it? We can't stop it. Correct. This is a natural occurrence thing, natural phenomena. ये तो हम स्टॉप नहीं कर सकते. ये नेचर जो चाहेगा वही होगा. ओके. हम इसका पाथ भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते आज तक. ये एक्यूरेटली भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता. हमने जैसे बोला विंड स्पीड, पर ये एक्यूरेटली नहीं कि 100% ही आएगा. एक दो दिन पहले ही पता चलता है. तब तक वेरी मच लेस टाइम. That's why आगे पता नहीं चलेगा तो how the people will be prepared, how the people will be ready to move to another place. Think this thing. ना सेम में जैसे लाइटनिंग हम लोग समझे, थंडरस्टॉर्म समझे, साइक्लोन जैसे ये अननेचुरल इवेंट है, ये अनडिजायरेबल इवेंट है, वैसे और एक इवेंट है नेम्ड अर्थक्वेक, जहाँ पर अर्थ विल बी शेकिंग. So first let's we will be seeing a case study. Before that, let's see what does earthquake means. Earthquake. Right. This is our word. Earthquake. Do you know what does earth means? Everyone should know that. What earth means? Earth means our pyara planet, that is earth, where we all live. Now who can tell what does say quake means? Quake. Quake is a sudden movement. Quake is defined as the sudden movement. The earth is ongoing a sudden movement that cannot be predicted also. Earthquake, lightning तो predict कर सकते हैं वेदर, पर ये तो वेदर में नहीं होगा, ये तो टेक्टोनिक प्लेस में वो हम लोग आएंगे. It can't be predicted. Can't be predicted. So ये क्योंकि ये सडन मूवमेंट है, कब मूवमेंट होगा ये हमें नहीं पता. So they are mostly unpredictable.
and cause a harm, राइट. साइलेंट मूवमेंट होगा. और जैसे एक केस स्टडी देखिए. केस स्टडी ने की इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आया है, दो जगह में, एक 205 में हुआ था, उड़ी एंड तंगधर टाउन्स ऑफ नॉर्थ कश्मीर. देखिए कैसा अवस्था है बिल्डिंग्स का. द बिल्डिंग्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फुल्ली, राइट. एंड भुज में 2001 में आया था, वेरी डैमेजिंग. ये वन वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस अर्थक्वेक में आएगा. डेंजरस अर्थक्वेक में भूज अर्थक्वेक आएगा. इट्स डेंजरस, मैसिव अर्थक्वेक, मैसिव. Okay, now you do this activity when you get time. Okay, this will be your work. Chalo, what is an earthquake? What happens when it occurs? What we can do to minimize these effects? Let's study. देखिए यहाँ पर लिखा है, earthquake is a sudden shaking of the earth. Earth is suddenly shaking. ये GIF चल नहीं रहा है, ये GIF था. Sudden shaking of the earth, ऐसे ये शेक कर रहा है. ऐसे sudden shaking of the earth due to disturbance in the earth crust. आप एसएसटी में पढ़े हो कि ऐसा लेयर होता है. एक होता है कोर, एक होता है आउट इनर कोर, एक होता है आउटर कोर, एक होता है मेंटल, और उसके ऊपर में थिन लेयर होता है जो कि जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, क्रस्ट. थिन लेयर हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट. इस क्रस्ट में जब सडन डिस्टरबेंस आएगा, सडन क्रैश, द वर्ड इफ आई यूज यू कैन अंडरस्टैंड, सडन क्रैश होगा, तब जब हमें समझ में आएगा, देन वी विल बी, दिस विल बी हैपनिंग. दिस इज विदाउट बीइंग नोटिस्ड. ये कब क्रैश होगा, क्योंकि दोनों ऐसे आया है. कब ये ऐसे इराब होगा, कब ये क्रैश हो जाएगा, कब ये राइज हो जाएगा, हम तो नहीं पता. Major earthquakes cause damage to life and property. Earthquake can cause floods, landslides, and tsunamis. Now, अगर ये earthquake माउंटेनस एरिया में हुआ, माउंटेन एरिया में, तो क्या होगा, ये माउंटेन है, माउंटेन शेक कर रहा है, तो प्लान भी शेक करेगा, रॉक्स भी शेक करेगा, तो ये रॉक विल बी मूविंग डाउन, causing what, causing लैंडस्लाइड. दैट इज वेरी, इसका यहाँ पर हाउस है समझो, उसका हाउस भी डिस्ट्रॉय हो जाए. दैट हाउस विल बी आल्सो डिस्ट्रॉयड. नाउ सेकेंड केस हो सकता है आपका कोस्टल एरिया में. दिस इज योर सी. सी के नीचे अगर मूवमेंट हुआ, तो दिस राइज अप लाइक दिस and cause either tsunami in the ekdom where there are seas and oceans, there tsunamis will be caused, and in the river side there will be flood. A major tsunami occurred on 2004. The coastal areas, see how they are suffering. Check. You can even imagine your car, you are sitting and the water is taking a smash, and you don't know you will be surviving or not. Your house is being smashing and going in the seas and oceans and rotating. Can you even imagine that? So furious, so dangerous, right? Do this activity also. Activities are all your homework. So homework too. So what you have to do, this is your Andaman and Nicobar Island. Mark other countries around Indian Ocean which could be suffered damage. यहाँ पर बहुत बड़ा devastation हुआ था,
बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। इससे, इस अर्थक्वेक मूवमेंट से कौन कौन अदर जगह में पीपल को सफर किए, और उसको लीजिए, उनका अकाउंट्स को आपको फाइंड करना है। Too much detail is not needed for this class. Which of the following natural phenomena cannot be predicted? Lightning, earthquake, yes, cyclone. Obviously, the answer will be earthquake. Why? मैंने बोला ये सडन मूवमेंट है, एंड दिस आर तो वेरियर कंडीशन से पता चलता है। लेट्स गो टू अ क्विज। द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड कॉज, इसे क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक बोलते हैं। नेक्स्ट, अर्थक्वेक इज सडन शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, ये ठीक है? ट्रू और फॉल्स पहले इस ऐसे देखना होता है। ये आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि कैसे ऐसा ऐसा रीजन सॉल्व किया जाता है। चलो जूम कर लेते हैं। है क्या? earthquake is a sudden shaking of the earth lasting for very short time. Earthquake is a okay, so it is written earthquake is a sudden shaking। पहले ये स्टेटमेंट को देखिए, ऑफ अर्थ, ये एक लाइन है एक्चुअली, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ये ट्रू है, ये ट्रू है। फॉर लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम, ये आई गेस ट्रू है, राइट? एक सोचेंगे आप, earthquakes can cause floods, this is also true। What do you think is correct explanation? Earthquake is a sudden shaking because it can cause floods। याद कीजिए, याद कीजिए, earthquake शेक होता है क्योंकि earthquake कॉज करता है फ्लड। ये क्या रीजन हुआ? इट्स नॉट अ करेक्ट रीजन तो। I will check after ऐसा right, because earthquake is a sudden shaking of the earth lasting for a very short time because earthquake can cause flood। नहीं, so this is now not the correct explanation। Clear? Why cyclone and thunderstorm is less than just an earthquake? Because it can be predicted, but cyclones can't be, right? Chalo, what causes earthquake? Do you know? Who know how what causes earthquake? You have learned in SST in class maybe 7, in class 7 science also, SST also you have learned। Tell me, who remember what is earthquake? Sorry, earthquake cause. Very good, Annesa. It is tectonic plates. Very good. Well done. So देखो, in ancient time people predicted various mythological story। जैसे हमने पढ़ा कि लाइटनिंग को वो समझे थे कि इंद्र देवता एंग्री हो गए हैं, इसलिए वो हो रहा है। वैसे ही अर्थक्वेक को समझे थे एक बुल है, एक हॉर्न में है, उस बुल के एक हॉर्न में वो अर्थ है, और वे जब शिफ्ट कर रहा है, अर्थ भी शेक कर रहा है। और दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज माइथोलॉजिकल स्टोरी। तो देखो, ये हमारा अर्थ का डायग्राम है। दिस वेरी 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 वेरी, हाउ मच वेरी आई राइट, इन्फिनिटी वेरी इंपॉर्टेंट। जब कोई भी अर्थक्वेक का टॉपिक आपको आना है, इस डायग्राम को बना के आना है। ऐसे नहीं लिखा जाएगा कि ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ऐसे क्यों बनाएंगे? जब भी व्हेनेवर अर्थक्वेक का कोई सवाल आएगा, तब तो आप इसे लिखना ही होगा, क्रस्ट को क्या है, ट्रेमर क्या है। दैट टाइम दे हैव टू राइट ओनली, दैट टाइम यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम। क्लियर? क्लियर?
ओके, नाउ देखो, अर्थ के टॉप मोस्ट देखिए, जहां पर वी लिव, वेयर वी लिव, एक्चुअली दिस अ पार्ट ऑफ द क्रस्ट। ये क्रस्ट भी ऐसा होता है, दिस अ क्रस्ट। देखो, अर्थ का अगर क्रॉस सेक्शन करेंगे, something like this we will get. Here is the inner core, here is the outer core, here is the mantle, and this is the crust. And इस crust के top portion में land है, where all the civilizations are there, where we are living. Now if this crust will move, then this land will move. Everyone agree or not? इसके बिलो में crust है, ये हमारा लैंड है, ये हमारा क्रास्ट है. Now if this is moving, the land will be also moving. Clear? Clear? If this, that will be moving, the land will be also moving. The land will be also moving. जब whenever whenever the, because it's just below the land, that's why, see, is the land and this is the crust. If this is moving, this will be automatically moving. तो तब हमें वो एक सडन शेकिंग समझ में आता है. तो ये टॉप मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट लेयर को क्रस्ट बोलते हैं, और डिस्टरबेंस को बोलते हैं ट्रेमर. ये शेक जो हो रहा है, इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेमर. बहुत डीप में चला जा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, क्योंकि इस सेशन में इट इज गोइंग टू अ बिग सेशन. ना देखो, द अपर मोस्ट पार्ट इज फ्रेगमेंटेड. जैसे आपका खेलते थे ना ब्लॉक्स, यार ऐसा गैप होता था, वहां पर और एक ब्लॉक लग जाता था, उसके ऊपर भी ऐसा होता था, उसमें और एक ब्लॉक लग जाता था, राइट. वैसे ही देखो, ये एक प्लेट है, ये कलेक्टेड है ऐसे, ये एक प्लेट है, ये कलेक्टेड होगा, ये प्लेट है, ये कलेक्टेड होगा. ईच फ्रेगमेंट बोला ना, ये पार्ट पार्ट में. अर्थ का जो क्रस्ट, इफ इट इज होल क्रस्ट, the crust is divided into fragments like this. Fragments means parts, smaller parts में divided. The smaller each part is known as the plate. देखो, if this one plate will be moving, if this one plate is moving, तब ये with the four plate will be moving together. मीन्स एक्चुअली इस क्रास्ट में क्या होता है, प्लेट होता है. व्हेन दिस प्लेट आर मूविंग, इट इज मूविंग द अदर प्लेट्स आल्सो, एंड दैट इज causing the upper part, that is the land, to shake. क्या ये क्लियर है? देखिए, ये कोलिशन हो रहा है, ये ब्रश हो रहा है, मतलब ब्रश मतलब ऐसे, कोलिशन मतलब ऐसे हो रहा है, और ये ब्रश मतलब ऐसे हो रहा है. So these plates always move. This place does not stop. Plates are always in motion. And we, remember the fact, we are also always in motion. जब this one plate is moving, another plate is being brushed, तब शेक हो रहा है दोनों प्लेट, कोलाइडिंग, शेक हो रहा है ना. जब व्हेन अ प्लेट इज ब्रशिंग, तब उसका इफेक्ट बहुत लो होता है, पर जब वो कोलाइड कर रहा है, तब उसका इफेक्ट बहुत हाई हो रहा है. सी, एक ऐसे ऐसे जा रहा है, और एक ऐसे ऐसे जा रहा है. सॉरी, ये ऐसे ऐसे नहीं है जा रहा है, ये ऐसे इस साइड से आ रहा है, ये इस साइड से आ रहा है, और ये नीचे ऊपर से ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है. टू टाइप्स, ये अप एंड डाउन होता है, और ये होता है
left and right. The tremors can cause volcano cause कर सकता है, राइट? क्योंकि जब अर्थ पे खिल रहा है, यहाँ पर तो लावा है ऊपर में। जब crust is this lava is being shaken up and is a mountain, यहाँ से फलक के तौर पर ये इराप्ट भी हो सकती है, इराप्ट भी हो सकती है। देखो, इसकी जो साइड वाला एरिया होता है ना, जो प्लेट के साथ जुड़ा होता है, ये बहुत वीक होता है और यही अर्थक्वेक कॉज करता है। इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं सेस्मिक और फॉल्ट जोन। सेस्मिक और फॉल्ट जोन ये क्या है? ये है इनर कोर, ये है आउटर कोर, ये है मैं सॉरी 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 देखो, दिस वन इज हियर इनर कोर, this one is outer core, this is mental, this is class check। चलो, the most certain areas are Himalayas, most certain areas are Himalayas, Kashmir, western and central Himalayas, northeast rain plateaus, Rajasthan, Indo-Gangetic, these are most, because you know हिमालय एक माउंटेन रेंज है, राइट? फ्रॉम वेयर माउंटेन इज forming, due to these earthquakes, due to these collisions, earth forming. Now when this plate and this plate is hitting each other, the some path is rising like this of the plate, the some part of the plate is rising. So when this collide, the this will be rising and mountain will be forming. So these are rising, so the mountain is forming. So wherever there is a mountain, that areas are earthquake prone regions. Can we measure the power this guy has invented? That is called as Richter scale. What is Richter scale? The power of the earthquake is to the 1 to 10. Okay. Now realistic earthquakes will be having more than 7, and this less than will be having less. Okay, here what we will display power. So, क्या होता है, एवरीथिंग विल बी मूविंग, जस्ट यहाँ पर एक पेपर होता है, यहाँ पर ऐसे पेन होता है, पेन इज स्टक with something that will learn in a haze cast. This will be in the stand position and this will be moving. So वहाँ पर पेन का काली ऐसे 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 होगा और that will be giving the magnitude. ऐसे जितना बड़ा होगा वो कम magnitude, जितना कम होगा वो कम magnitude, like this. See, these waves are called as the seismic waves, and the instrument is known as the seismograph. The seismograph is simply a vibrating rod or a pendulum which starts vibrating with tremors occur. A pin is attracted to the vibrating system. When everything is rotating, this is in the rest position and it is making a line on a paper. The pen records a seismic wave on a paper which moves under it. By studying these waves, scientists can construct a complete map of the earthquake. They estimate its power to the cause of its destruction. Device used to record seismic wave. Seismograph. Waves produced on the earth due to these stellar tectonic plates. Wave. This is the seismic wave, and yes, tectonic plates. Very good. करेक्ट। चलो, क्विज टाइम में चलते हैं। द पार्ट ऑफ द अर्थ responsible for the earthquake, crust, mantle, inner core, outer core.
Very simple question. Sorry, crust. Next, let's move to the which of the following correctly describes revolution of Earth around the Sun. Disturbance of Earth crust. This is the correct one. Chalo. A Richter scale is used to not correct. This is the correct one. Really, let's have minus. True. Record seismic waves. Orozima- yes. Richter scale is used. Richter देखिए जैसे मैं भी यहाँ पर गलती कर बैठा. Richter scale is not used. What is used? You know, seismograph. Richter scale क्या है? Richter scale is the magnitude, is the scale that have the numbers. बस. That doesn't measure. Seismography is used. Protection against earthquake. Earthquakes can be highly destructive. It is very important to take necessary precautions to protect ourselves all time. People living in a seismic zone. Seismic zones means that is prone to earthquake. The zone that is prone to earthquake. Earthquakes can be really destructive. They are very destructive. It is important to take necessary precautions. तो वहां पर so design that can measure tremors. वहां पर ठीक से steel rod will be planted, right? Next, highly seismic areas, the use of mud is better than the heavy construction. Mud का use होगा, right? Keep roof as light because ज्यादा roof होगा तो वह fall करेगा, damage will be there, heavy नहीं होगा, right? Next, next, it is better if the cupboards and the shelves are fixed on the walls and so that they will not be fixed. Wall में होगा तो वो fix नहीं करेगा, ये तो वो fall हो जाएगा. The wall clocks, photo frames, water heaters should be hanged at those places so that it does not fall on people during the earthquake. ऐसे आप photo frames अपने माथा के ऊपर लगा दिए, fall कर जाएगा. So that should be not the case. Since some buildings may catch fire due to earthquake, fire equipment will be there. When during an earthquake, टेबल के नीचे में this pose में you have to sit so that everything falls on table and you are not hurt. Stay away during the earthquake. Stay away from a tall and heavy object. If you are bed, protect your head with pillow. Protect your head with pillow. Okay. If you are outdoor, find a clear spot or buildings and drop to the ground. Don't stand. Don't lay down. Drop to the ground. Correct way. Okay. If you are in a car, do not come out. Ask the driver to drive slowly to a clear spot. एक फार्म में वहां पर कार को पार्क करने को बोलो, पूरा जगह में नहीं करना है क्योंकि ये मिनिमम 10 मिनट्स के लिए होगा, मैक्सिमम 10 मिनट्स के लिए होगा. तब वेट ही कर सकते हो, राइट? Let's go to the quiz about the precautions. What is the use of timber mud better than other heavy construction material? Because heavy material will be making more damage, but that will be not getting damage. So minimum damage, right? Due to which of the following should every reason is due not this one. Every is because I've told to minimize the damage. It is told minimize the damage. Okay, which are the following should be done when you are outside during earthquake? Remain at the clear spot. Ask a driver to if your car come out. This one. Why we will come out? Why we will come out? We have to stay in the place. So let's summarize. Earthquake is a sudden shaking of the earth. Uppermost layer of earth is called crust. The movement is called tremors. Earthquakes are caused by the movement of the plates. The power of is by Richter scale more than 7. Very destructive.
Seismic waves are the tremors. It is recorded by the seismograph. Earthquakes are very destructive. So we should be always prepared. Those mainly those who are living in the seismic zones, in the weak zones. They should be prepared always. So that's all for this chapter. This chapter is completed some natural phenomena. So we have completed one chapter from chemistry, maybe. Yes, chemistry. The second is from physics. The third chapter is biology, that is the conservation of plants and animals, that will start the next day. Very easy chapter. How we can conserve our plants and animals, that is the chapter. Very easy chapter, very important chapter, and very practical chapter. Till then, take care. Bye bye.